Good morning, everyone. My name is Simran Chaudhary, and I welcome you all to ThinkPink Advancing Breast Cancer Treatment Through Innovation, a virtual podcast series for Breast Cancer Awareness Month, October 2024. In this series, we'll explore groundbreaking advancements in breast cancer care, featuring insights from leading experts. Today, we are privileged to be joined by Dr. Seema Singh, Principal Surgical Oncologist at Yashoda Super Specialty Hospital, Koshambi. With an impressive background in cancer care, Dr. Seema has an extensive experience in a wide range of cancers, including breast, ovarian, head and neck cancers. An alumnus of the prestigious Institute of Medical Sciences, BHU, and with an MCH in surgical oncology from AIMS, New Delhi. Dr. Singh has worked at top cancer centers like Rajiv Gandhi Cancer Institute. She is an active member of Key Medical Association and is passionate about advancing cancer care through awareness and innovation. So request you all to please join me in welcoming Dr. Seema Singh as we explore the latest innovation in breast cancer treatment. Welcome to our show, Dr. Singh. Hi, am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, namaskar and good morning. Thank you for inviting me, and it is always a privilege and overwhelming for me to share my experiences and to share and explain the consequences or not being aware of and what does it take. How can we make ourselves and our near ones making aware of the disease, or how can we proceed so that one may not get this disease in other way around. So don't get scared about the disease and its term. So let's proceed with our discussion where we can resolve other myths and we can discuss few more interesting facts also. So thank you for inviting me. We can start if Yes, everybody is ready. thank you so much. Thank you so much, ma'am, for taking out time out of your busy schedule. So, starting with, can like we just got a gist about a brief about your background and your career. So, I would be starting exactly from the topic where we are here to discuss. So, what are some of the most significant changes you have observed in the breast cancer treatment over the past few years? Because the kind of extensive experience you have, I think you're the best person to answer this question. Still, the information and awareness is lacking. You will be surprised, even with the best possible treatment and doing all the campaigning, all the awareness programs. Many even learned females, educated women also, they attend to our OPD very late. So my point of agony is that breast is such a superficial organ which you are touching daily while wearing clothes, while bathing. है ना, एक organ है जो आपकी body में है, ऊपर से आपको दिख भी रहा है, feel भी हो रहा है. Nobody can be unaware of the breast. है ना, जैसे अब मैंने कपड़े पहने हैं तो मुझे पता है कि where is my blouse going, where is my neckline. So it is such a superficial organ. Despite that, why do women ignore or avoid their disease, or they don't want to accept this? Can it be cancer? Or let me discuss this issue with my nearby available cancer surgeon or any breast surgeon who are the better person to guide me कि देखो परेशान मत हो, ये कैंसर हो सकता है या ये कैंसर बिल्कुल नहीं है, या क्या ऐसा करें कि आगे कैंसर हो ही ना. Because there is only one way to prevent cancer is the early detection. जब हम ये कहते हैं कि वन वे इज टू प्रिवेंट, मतलब केवल एक ही रास्ता है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को. देन हाउ? ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो स्टेज 3 में डिटेक्ट ना हो, स्टेज 4 में डिटेक्ट ना हो, उसको डिटेक्ट कर लें या स्टेज 0 में. So we must make people aware of also, and people must also understand this. Women also must understand this. अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो I must not ignore. Let me go through the examination और checkup. क्या होगा? योर गायनाकोलॉजिस्ट वो क्या करते हैं, पहले जाते हैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास. There is nothing wrong in that, with full modesty, and I respect all the gynecologists. But आप प्रॉब्लम उसके पास लेके जाइए जिसके पास उसका सोल्यूशन हो. मैं हमेशा अपने अवेयरनेस कैंपेन्स में, हम लोग बहुत सारे फाउंडेशंस के लिए भी अवेयरनेस टॉक्स करते हैं, तो हम उसमें भी यही एक्सप्लेन करते हैं, बी इट कंपनी और बी इट रूरल एरिया और बी इट एन एमएनसी, कि आप कार्डियोलॉजी के रिलेटेड प्रॉब्लम उसके पास लेके जाइए जो कार्डियोलॉजिस्ट हो, है ना.
जब किसी को एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो वो किसके पास जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट के पास, है ना? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो किसके पास जाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास। इसी तरह अगर आपके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज ब्रेस्ट सर्जन के पास या प्रॉपर ऑन्को सर्जन के पास जाइए। ऑन्को सर्जन के पास जाने से दे विल नॉट गेट कैंसर। मेनी पीपल डे से मी कि मैम नहीं जाते हैं ना, जाएंगे अगर कैंसर निकल आया तो। सो दिस थॉट, निकलेगा तब अगर वो होगा, नहीं होगा तो नहीं भी तो निकलेगा, राइट? सो वी मस्ट सेंसिटाइज पीपल कि इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ ब्रेस्ट कैंसर ओनली व्हेन इफ इट इज अ ब्रेस्ट कैंसर। At least there would The be a better clarity. better people to tell you no, it's not a cancer, don't Yes, worry, yes. right? And I So what believe is they the will. extent, how much? Yes. I was saying कि there would be a clarity कि in case if they went to a right doctor, oncologist है, oncosurgeon है, the the best person, the best doctor जिनके पास जाना चाहिए और जाने से issue address होगा, तो at least वो clarity मिल जाएगी कि है या नहीं है time पर diagnose हो गया तो Yes, treatment से शुरू हो सकती है, नहीं है then of course, of course. रिसेंटली एक सेलिब्रिटी को डायग्नोस हुआ है ब्रेस्ट कैंसर। yes एवरीवन हु इज अटेंडिंग, आई एम श्योर दे मस्ट बी नोइंग हर नेम, आई एम नॉट हियर टू डिस्क्लोज। आई मीन बीइंग अ सेलिब्रिटी यू कैन जज द एक्सटेंट ऑफ ignorance. Being a celebrity, that too in breast organ, which is superficial organ, doing so much gym exercise, particular person is not able to detect. No, they might be ignoring. There are chances. So with due respect, don't do this because your life is in your hand. And you won't believe, Simran, if we detect breast nodule or any lump in stage 0 and stage 1, cancer surgeon are the most happiest person. We really feel very grateful. Oh, हमने एडवाइस किया, पेशेंट ने देखो टाइमली डिटेक्ट हो गया, क्योर हो गया, अभी उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उसको डरने की जरूरत है, right? And treatment is also so much advanced. Earlier, it originated from the total breast removal, then muscle removal. Now, then it gradually it shifted toward the muscle preserving. Now we are talking only about breast conservation, breast preservation, breast reconstruction even. So people should come forward. They must not be afraid. I have heard many gynecologists, नहीं डॉक्टर साहब इसका ना breast पूरा निकाल दीजिए. Why? If it is not needed, why should I remove breast? So I must be clear in my thoughts first. I must be convinced. I must be trained properly how to do that procedure without increasing the risk of recurrence or tumor coming back. Right? If I myself am not convinced, how can I explain it to others? said it right, ma'am, since we are talking 45 to about 50 this. minutes in explaining each and every patient to Yeah, this. since we're talking about the new medical advancements, that how things have changed. Earlier there was, now we have moved to breast conservation or restructuring of it. So I think these are the advancements. Earlier it used to be like completely cut out of from the body, and now we have so many other options. So this surgical techniques and innovation has evolved, and I want to discuss about surgical techniques such as cytoreductive surgery and HIPEC transformed and treatment landscape for breast cancer patient. How has these innovations changed the surgeries of breast HIPEC cancer? is not actually for the breast cancer, Simran. HIPEC is for the ovarian cancers. Okay. Yes, ovarian cancers and other stomach gastrointestinal cancers. For breast, recent advancement is the introduction of the robotics in the breast surgery, where patient's skin of the breast can be totally conserved and preserved, at the same time removing the breast in such a manner without any, giving them any cosmetic deformity, and with the same oncological or cure outcomes. But provided the cancer should be very early. There is only one limitation to this technique. Thank you so Because much, ma'am. removing breast is something which you are not doing justice to a female. They won't Yes. be able to wear clothes. They are very shy to go out to attend any functions. Every time whenever any person see them, they ask, why is your breast removed? How are you now? So treating psychological, mind, emotional health is very important when we discuss cancer in any organ. Yes.
I think you pointed out right. Even after the treatment, there's still this psychological impact which remains there in the patient, whether it is any type of other cancer. But as we're discussing about the recent advancements in treating breast cancer, so there's one thing called personalized medicine, which is now everybody talking about. It is in use and how impactful it is. So, can you discuss any recent advancements in personalized medicine that are making difference in breast cancer treatment? Personalized medication in breast is only for the people who have been diagnosed with a hereditary breast cancer. Suppose in any family, any person is having a breast cancer and we test them depending upon the indications, whether there is any indication for hereditary cancers or not. Hereditary cancers are those cancers which are governed by genes and being inherited from their parents on either side. If any person is being diagnosed with a hereditary breast cancer, then they must be checked for genes whether they are able to transmit that genes to their next progeny. Then you can start personalized medications for the next progeny, not for that patient particularly. Number one. Second, personalized medication means the biology of the tumor and the property of the tumor. Every tumor behaves differently in each and every organ of the body. So once you detect the biology of the tumor, identify how fast it can progress, then you can target that. If there is a particular target for any medications, any target जिसको हम target करते हैं, Thank you, ma'am. Thank you so much for explaining that. Moving on to my next question, that we know that there are many other challenges while treating breast cancer patients, and you are in this sector treating patients in so many years. So, what are some of the biggest challenges currently in breast cancer care, and how can the innovation, which we are more focusing and for this month's theme? So, how can innovation help overcome these challenges? first thing is communication. Hmm. Communication between the treating surgeon, cancer surgeon, and a patient is very important, including the communication and full attention of the patient. We must judge first how much serious are they to pursue the treatment. First thing, both patient and attendant. Never ever judge or never ever give any counseling depending upon the reports received on WhatsApp, because if any typing error is there in report, our entirely treatment is messed up. Hmm. So I would like to emphasize through your platform, whosoever is listening and whosoever will listen in future, please, आप जो कुछ कर रहे हैं वो हेल्थ के लिए कर रहे हो ना। हम कहते हैं हम सुबह कमाते हैं क्यों? क्योंकि भगवान ने एक पेट दिया है, खाना खाना है, ओके? उसका पर्पस क्या है कि हेल्दी रहना है, फिर उसके बाद अच्छा दिखना है, राइट? फिर उसके बाद अच्छी लाइवलीहुड चाहिए। ये ऐसे ही इस यही ऑर्डर है फॉर एनी Yes. क्लास ऑफ द पीपल। तो टेक योर हेल्थ सीरियसली, पैनिक ही मत होइए, डोंट गेट साइकिक, नहीं अगर हो गया तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा। उससे अच्छा बोलिए मुझे नहीं होगा, और होगा तो आई एम रेडी टू फाइट इट फॉर। देयर आर पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर 30 or 40 years of age since they have been diagnosed and cured for past 30 years or 35 years. We know many of them, especially in female. व्हाट हैपेंस, आज मॉर्निंग में थोड़ा ब्रेस्ट में नोड्यूल लगा, कुछ काम करने लगे, फिर ऑफिस चले गए, फिर घर आए कुछ और करने लगे, वी टेंड टू इग्नोर एंड अवॉइड, बट वी टेंड नॉट टू टेंड इग्नोर टू अवर टूथ है। दांत में दर्द होता है तो कोई नहीं इग्नोर करता है ना? नेजल पॉलिप आ जाएगा, कोई फेस में आपके पिंपल आ जाएगा, आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इमीडिएटली यू वुड गो इन द इवनिंग टू एनी डर्मेटोलॉजिस्ट or you will Yes. google. And second thing, don't google information, because google will give you thousands of the points and you may not fit into any of them. Every patient has a different spectrum, even you may not be a cancer patient first of all. Hmm. So regular checkup doesn't harm. So मैं सबसे यही कहूंगी, आप सबका ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले अपना भी ध्यान रखो, राइट? Yes. क्योंकि आप हेल्दी होना बहुत जरूरी है, भले आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी तकलीफ होगी, फर्स्ट यू आर गोइंग टू सफर। सो उसको हेल्दी रखने के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। बी सेल्फिश फॉर योर हेल्थ। डेली अपने लिए 1 घंटे निकालिए, मॉर्निंग हो इवनिंग हो, निकालिए अपने लिए। बॉडी को उतने खाने की जरूरत नहीं होती जितना हम खाते हैं प्रैक्टिकली, राइट? नहीं, अगर एक टाइम का मील स्किप हो गया, नो प्रॉब्लम्स,
डोंट ओवर ईट। ये Yes. सबको पता है, बस इसको प्रैक्टिस में लाना है। सबको पता है शुगर्स आर बैड शुगर्स, राइट? सो ट्राई Yes. ट्राई टू अवॉइड गुड़ खाओ, लेकिन हमें क्या लगता था ना, हमको मॉडर्नाइजेशन अपनाना है। तो ये सारी चीज़ों को ना बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मुझे पेशेंट्स को काउंसिल करने में, एंड आई लव दैट, आई लव व्हाट आई डू, है ना, उसी के लिए हम आए हैं, है ना, उसी के लिए हम कैंसर सर्जन बने। काउंसलिंग से घबराएंगे तो कैसे चलेगा? सो आई एम ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, इवन के फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार मुझसे शेयर करते हैं वो, सो आई डिस्कस विद देम। तो इसीलिए मेरे पेशेंट जब होते हैं बहुत अटैच भी रहते हैं। गॉड फॉरबिड अभी तक मुझे ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला जिसने बोला हो कि डॉक्टर सीमा ने मुझे गलत काउंसलिंग की है, हमसे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हाइड की है। मेरा कहने का तरीका बदल सकता है, बिकॉज माई फर्स्ट जॉब इज टू मोटिवेट देम फॉर ट्रीटमेंट वॉट एवर देयर स्टेज इज। सेकेंड जॉब इज do they need to spend and where, whether it is actually needed or not. So all these perspective we discuss, and it is the most time consuming and we must pay attention to this. नाइफ चलाना तो 1 मिनट का काम है, कभी भी डिसाइड करके आप चला दोगे, राइट? बट मेकिंग देम रेडी सो दैट कि जब वो एनेस्थीसिया में जा रहे हैं उस समय भी उनको ये ट्रस्ट हो कि नहीं, आई विल कम बैक एंड आई एम क्योर्ड। द मोमेंट सर्जरी इज डन, पेशेंट इज क्योर्ड, एक्चुअली क्योर्ड। आगे के जो ट्रीटमेंट है वो तो प्रिवेंशन के लिए है ना, कि बीमारी वापस ना आए, आप हेल्दी कैसे रहो। So all these things must be kept in mind before counseling session is, and one must take counseling session very seriously, both doctor and a patient also. I think that is right, ma'am, because that is how the trust is built between the patient and doctor. और जितना Yes, better ऑन मतलब ऐसे कनेक्टिंग इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट पे भरोसा होगा पेशेंट्स को, एंड दैट्स हाउ दे मूव फॉरवर्ड इन विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन दैट इज अ वे फॉरवर्ड ट्रीटिंग. First, get it diagnosed early and then start the treatment as early as possible. And like you mentioned about one of the celebrities who realized that he was diagnosed at a later stage. So I think yes. all those people becoming vocal about their, problems and the treatment journey they're going through, that is also motivating others that, if they can fight, we can also fight. If something has Of wrong, course, that can be corrected. that's why I redefine the spelling of cancer, CANCER ना, तो इस must be CANSUR, है ना, can survive। इसीलिए जब कई Yes. लोग बोलते हैं कि नहीं वो कैंसर सर्वाइवर है, वी मस्ट नॉट यूज दिस वर्ड कैंसर सर्वाइवर, आप उसके साथ एक कैंसर का टर्म हमेशा जोड़ के रखते हैं। हाँ. शी इज फ्री फ्रॉम कैंसर, शी इज हेल्दी वुमेन, व्हाई आर यू सेइंग हर कैंसर सर्वाइवर? लोग सर्वाइवर मीट्स कराते हैं, मैंने कभी नहीं कराई, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि मेरे पेशेंट्स का वापस में वो उसी स्टिग्मा से मिले, फिर वो रोज सबसे मिले, सारे पेशेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, फिर किसी घर में कुछ इशू होते हैं वो उसको आपस में डिस्कस करते हैं, दे एक्सचेंज देयर थॉट्स। सो वी I think मस्ट that बी वेरी, chapter, यस, yes, अगर हम that chapter. इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की बात करें तो इंडिविजुअलाइज केयर भी होनी चाहिए। सो इट रियली वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन, है You ना। said it लोग right, ma'am. यहाँ And I आपके think प्लेटफॉर्म से एक और चीज, सॉरी मैं कहना चाहूंगी ना, लोग कहते हैं कि बायोप्सी करवाने से कैंसर फैलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा okay. कुछ भी नहीं होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क द पीपल हु विश टू प्रोसीड द कैंसर ट्रीटमेंट विदाउट गेटिंग बायोप्सी, हाउ इज दिस जस्टिफाइबल? Mm. बिना डायग्नोसिस बनाए आपको कोई लेबल कर रहा है कैंसर और आप उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हो, कैसे? बिना बायोप्सी के आप तभी प्रोसीड करो जब बहुत स्मॉल ब्रेस्ट ट्यूमर हो और आपकी हॉस्पिटल में जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां फ्रोजन सेक्शन एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पैथोलॉजी में हम तुरंत वो ट्यूमर भेज देते हैं, आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है वेदर इट इज कैंसरस और नॉट, जिसके डिपेंडिंग अपॉन विच वी कैन प्रोसीड फर्दर एज पर द रिपोर्ट्स, Okay. एज पर द फाइंडिंग्स ऑन माइक्रोस्कोप। अदरवाइज देर इज नो नीड, भाई आप ऐसे जाओ। लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जब प्रोसीड करते हैं ना, उसमें ये मेन प्रॉब्लम आती है, स्टेज 1 सीधे स्टेज 4 होने लगता है। उस समय आप ट्यूमर के साथ तो पेशेंट को नहीं छोड़ोगे ना, आप क्योर करोगे, बिकॉज पेशेंट टर्मिनली बहुत पेन में होता है। तो इंटेंट ये होना चाहिए कि वो क्योर भी हो, लेकिन उसको पेन कैसे उसका कम कर दें। आई एम वेरी सेंसिटिव टू पेन फॉर द पेशेंट्स, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया सबसे यही बोलती हूँ, जो भी हमारे साथ पेन एंड पैलेटिव है, मेरे पेशेंट को बस दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द ब्रिंग्स द पेशेंट टू डॉक्टर ना, पेशेंट उसके लिए पहले आया है, उसको दर्द नहीं होगी वो कभी नहीं आएगा। इसीलिए जब ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, जो ट्यूमर स्किन की तरफ होते हैं, पेशेंट को तुरंत पता चलते हैं, पेशेंट उसको चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाता है। दोज आर द ट्यूमर्स
who got detected at an early stage. लेकिन जिनके बहुत पेंडुलस ब्रेस्ट हैं, बहुत बल्की फीमेल्स हैं, डीप सीटेड ट्यूमर्स है, वहां पे ये तो चलो हो सकता है कि स्टेज 2 या 3 में पता चले. अदरवाइज ब्रेस्ट इज वेरी टच सेंसिटिव ऑर्गन. इट इज यूजुअली डिटेक्टेबल इन स्टेज 1 and 2. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ ये जो हम जितनी बातें कर रहे हैं, ऑल दीज टॉक्स, दिस वुड इंस्पायर एंड एनकरेज पीपल मोर कि हम लोग रेगुलर चेकअप्स पे जाएं, सेल्फ एग्जामिनेशन करें या ऐसे कुछ. मैम, वन मोर थिंग, इफ यू कैन एक्सप्लेन आवर ऑडियंस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन एंड हाउ दे कैन डू दिस. सिमरन, इसके ना जैसे पेशेंट्स मैं तो बहुत देखती हूँ, ब्रेस्ट के पेशेंट्स हैं, कहीं उनको भी हेड एंड नेक भी आता है, तो उनके माइंड में बहुत सारे सोएं या ये पहन के सोएं, ये खाएं या ये नहीं खाएं. तो हम लोग अपने में ना एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे मैं 2-2 मिनट का 1-1 मिनट की वो बाइट्स में डालती रहती हूँ बीच में, जस्ट इसलिए नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़े, इसलिए कि हमें नहीं पता ना, आजकल हर कोई गूगल करता है. यस तो मैम. कहीं से किसी अगर 100 में किसी एक पेशेंट को भी वो सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो एटलीस्ट आई वुड बी हेल्पिंग टू दैट वन पेशेंट. श्योर मैम. है ना. तो इसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग कैसे हेल्प करती है. हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग करा लो, तो लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कैंप में पहले से तो आने से डरते हैं. अगर आप कार्डियक स्क्रीनिंग कैंप लगाओगे, लोग आ जाते हैं. कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में लोग आने से डरते हैं, उनको लगता है जाएंगे निकल आया तो फिर वही चीज है ना. मैं फिर भी कहती हूँ, जिस समय किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, कितना टाइम होता है उसके पास, आप मुझे बताओ, कितने लोग हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते. कैंसर एक डिजीज है जो आपको हॉस्पिटल तक जाने का भी टाइम देती है, क्योर होने का भी टाइम देती है, अपनी लाइफ जीने का भी टाइम देती है. ट्रीटमेंट जरूर उसमें इन्वॉल्व होता है स्टार्टिंग स्टेजेस में, अगर आप बहुत लकी हैं और आपने बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम को बिना इग्नोर किए पकड़ लिया तो. है ना. रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, कितना टाइम मिलता है न्यूरोसर्जन को क्योर करने के लिए. But in cancer, we can cure 80 or 90% of the patients, right? Yes Because मैम. this is the subgroup of the population who get themselves treated at an early stage without ignoring their disease. So breast self-examination had very good role. There is ideal time for the breast self-examination. One must do breast self-examination not during periods, not in the middle of the cycle. They must typically do it between the 20th to 22nd or 23rd day of their cycle. The days are counted from the first day of the last menstrual period. जैसे आज 18 अक्टूबर है, किसी को आज से पीरियड शुरू है तो उसका डे 1 आज होगा. कैलेंडर में एक डेट मार्क कर लें, 21st डे जब भी आने वाला हो, 21st से 23rd के बीच में अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर लें. टच करके इस सरफेस ऑफ फिंगर से you can rotate your hand clockwise or anti-clockwise manner and you can detect if any abnormal finding is there. We don't expect our persons or our listeners to be expert in the breast lump detection. Yes. That's why I used any abnormal finding which is not there or which they had ignored or they did not notice in past few months, and get it cross checked with the or any breast surgeon. So that is the ideal way. Even a small nipple discharge, one must not ignore at any age. At any age. After 25 years of age, they must pay attention to the unexplained nipple discharge, whatever the color is. Unexplained nodularity of the breast lump. कई लोग बोलते हैं फाइब्रोएडिनोमा एक एंटिटी होती है सिमरन. ब्रेस्ट में देर इज अ नोड्यूल. Many people attribute it to the hormonal changes. अभी तो ठीक है ना, हो जाएगा. Don't worry, it needs not to be removed. It's not like that. If any patient is having fibroadenoma, treat her. And if you are 100% assured on clinical examination, also on investigation, combine both the findings, and then categorize your patient. If that is actually a fibroadenoma, give them 15 days or 1 month medication, reassess that clinically and with ultrasound again after 1 month. If it is not reducing, remove it and send for proper histopathological examination. Don't when we do happens in fibroadenoma is a non-cancerous lump, right? Suppose this is lump. We are doing FNAC with the needle. Needle goes like this through the lump and beyond the lump, then again it comes back. Means इसके cells यहाँ जाएंगे फिर वापस आएंगे. तो जब आप बाद में सर्जरी कराओगे ना, what happen? The surgeon will remove this and small seedings will remain there.
आफ्टर 3 months or 6 months, be it a non-cancerous, but patient will bother. ऐसा तो नहीं कि कैंसर हो गया तो फिर से हो गया, देखो डॉक्टर ने तो बोला था नहीं होगा, right? Yeah. So fibroadenoma is a clinical disease, assessed clinically, proper correlate your findings with the ultrasound findings, whatever the patient's age is. Judge your index of suspicion, then go for a 15 or 20 days of medication. Only 1 or 2 medications are there. Then reassess is after 15 days or 1 month if the patient is comfortable to visit OPD. And don't wait the core of the nodule to resolve it through medications. Remove the core of the nodule. A small incision is there. No are needed. Even currently, machines are there which remove the capsules of the tumor. But I personally prefer en bloc excision with the capsule to prevent its future recurrence at the same site. Thank you so much, ma'am. You have explained everything to us in a very layman's language so that it becomes very easy for all our audience to understand the depth of why this screening, diagnosis, and treatment on time is important and how they can take care of themselves. I think all these words make a lot of difference, but I think all these things were for the patients and for the listeners. But one piece of advice for our medical fraternity, medical for your medical team as well. So during this breast cancer awareness month, what message would you want to convey to the message would you want to convey to your fellow oncosurgeons, oncologists, so that they can make a difference in this fight against the breast cancer? Please counsel your patient properly. Don't hesitate to show your face to the patient. Many surgeon they show, यार हमें तो ओटी करना है ना, पेशेंट देखो पहले. हमारे Hmm. मेंटर्स बोलते थे पेशेंट देखो, पेशेंट से बात करो, पेशेंट को समझो, spend time, है ना? I don't mind showing my face to the patient n number of times. I don't mind receiving their calls. This is what I love, because happy and satisfied patient will continue the journey with you. So this is the one piece of advice. We must pay attention to the counseling. The patient. Don't hesitate working and counseling. नहीं आप 5 बज गए हैं ना, मैं counseling नहीं करूँगा. Give them your number. There is no problem. They can connect with you. Patients are also understandable. You tell them particular time कि आप इस समय मुझे call करो. I will be able to pick up the calls. Hmm. Yes. It creates lots of confusion. कई बार वो किसी और इंटेंशन से बोल रहे होंगे, टाइप कुछ और करेंगे, कई बार आप कुछ और इंटेंशन से बोल रहे होगे, समझेंगे वो कुछ और. Communicate through words. So Just this this. is what, because I currently feel also recently that and experience this, there is lots of loss of empathy. We must have empathy in our heart. That is reflected in your work. That is reflected in your work, because being depends on this, na? Our very being. Hmm. If I am able to make 1% better, then only my work is suitable. I think on Time, this even message. 1% change if I can make, then that will be a change which I can contribute. Absolutely, ma'am. Ma'am, I think if doctor is able to help patient, which they work for tirelessly without any complaint or anything, then patient, I don't know, doctor remains they remembers their patients or not, but patient always remember the doctor who treated them, who make them out of this disastrous disease or any kind of thing. So I think that is how thing can work properly, and this is an important message for all the inspiring oncologists if they are watching this. So this is one of a very important factor which you mentioned about the empathy. It should be there. Slowly or gradually, I believe we are losing that. But going forward with our conversation, one last message to our listeners for on this breast cancer awareness month. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें. ऐसा नहीं बोलना है घर जाके कि डॉक्टर सीमा ने आज बोला है अपना ध्यान रखें. फैमिली का भी रखें, लेकिन अपना जरूर ध्यान रखें, है ना? हम, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं.
मेरी डॉटर का बर्थडे था कि मम्मी आप हॉस्पिटल क्यों जा रही हो, आज तो मेरा बर्थडे है। मैंने बोला ना वहाँ बहुत सारे लोग अपना बर्थडे हर साल हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, बहुत तो बढ़िया। किड्स आल्सो लर्न फ्रॉम आवर वर्क, एंड आई लव, रियली आई लव बीइंग विद द पेशेंट. I really take week offs or leave offs. I mean, I really work very hard to achieve this. That's why I'm here to with empathy, and I really am very proud of being from institutes where we have been trained. Our mentors were like that. That's why we transformed ourselves. So it is inner transformation which really helps the patient and their attendant to continue that journey. Yes. So Your this is work all. speaks a lot. The kind of experience you have, that is an example, and that reflects automatically that the kind of hard work you have done, the kind of enthusiasm you have towards your work, that is great. And this is all, this is what we require in today's time when people are ignorant towards their health. We need more and more doctors like this who can inspire, encourage, and motivate everyone out there to be vigilant and aware about our health. So thank you so much, ma'am, for becoming one of a very strong voice for this breast cancer awareness month and spreading awareness with voice of healthcare from a platform like this, because it means a lot. Like, people are getting your insights and experiences from the doctor itself, because uh, this is exactly from the experienced person coming from. So thanks a lot for coming to this platform and sharing your valuable time with us. And please tell your viewers whatever myths and questions do they have, they can share in the chat box if you have opened that, Yes, or ma'am. in comment section whenever you post it. we So we we can are discuss those issues also. And yes. next month and afterwards, there is ovarian cancer awareness month, cervical cancer awareness month, cancer cervix, endometrial. So we can discuss then also if I mean everybody is available and ready. We'll definitely do that, ma'am. And in case anything, any comments or something comes around, we'll definitely Sure, direct it sure. to. Anytime, anytime. Even you can share them my number, or they can go to the website. They can post their questions. They can leave their number, or they can connect with us. If we are not available, they can leave a WhatsApp message with their number. Our team will call back, and I will connect with them. There is no problems. That's great, ma'am. If doctor is available to help a patient any time of the day, this is what we all want. So thanks a lot for this Yes. enthusiasm. And last thing, extra advice without being asked to the patient, uh, we must develop habits of reading books. Yes, ma'am. It helps to motivate us, and please avoid watching TV and daily soaps. It really hampers your mind. It creates a lot of negative influences around. So try to engage themselves in books. नहीं पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। गीता पढ़ना चाहें, बहुत अच्छा है। कॉमिक्स पढ़ना चाहें, बहुत अच्छा है। कोई जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स आती हैं इतनी, आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। Currently we I am writing a book on the my experiences with the patient and their family stories in a very good narrative form of way. So once that is out, I will let you know. Some patients may experiences may help others in pursuing their journey. Exactly. Very But true. I don't know कहाँ से किसको क्या information मिल जाए. Yes. Curable, everybody will be cured. थैंक यू सो मच Right. मैम फॉर, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे पास एक हो सकता है टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन. इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज, इट कैन बी क्योर्ड, सो there's no need to be, fear about this. So thank you so much for coming to our platform. It matters a lot. Thank you. Thank you so much.